So India takes on Afghanistan at the Firoz Shah Kotla, now better known as the Arun Jaitley Stadium in Delhi. And it is our job to track the India matches. So there are about 8 left. And so the point here to remember here is that India is coming into this match on the back of a very impressive win against Australia. And they beat the 5-time champions pretty well. Then on top of that, Afghanistan have had a bad run so far. They were beaten by Asian rivals Bangladesh by 6 wickets. My good friend CS is here with me. CS, a very warm welcome to you. And we didn't take a break because of the Asian Games, but we are back to doing what we love. So सबसे पहले सवाल CS आपसे ये है कि ये जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच है, इसमें दर्शक जानना चाहेंगे कौन जीतेगा और कितने रनों से जीतेगा? Knowing the Kotla pitch for last 30-35 years, I can only tell you if India bats first, it could be, just a murderous, track for Afghanistan. साउथ अफ्रीका ने 420 ऑड रन 424 या कितना बनाया था, लेकिन इंडिया का मुझे लगता है कि मे बी दैट इज अ लिटिल बिट टू मच टू आस्क फॉर एवरी टाइम, लेकिन इंडिया 350 प्लस जरूर जाएगा. एंड स्पेशली एट ए टाइम जब ईशान किशन, उनको मौका मिला है, पहला वर्ल्ड कप है, पहली इनिंग्स में 0 पर गए हैं, और रोहित शर्मा, दोनों कप्तान, दोनों भूखे होंगे रनों के लिए, और उसके बाद श्रेयस अय्यर, उनको भी टीम में जगह बनानी है, वरना स्काई फैक्टर बाहर बैठा हुआ सूर्य कुमार यादव, तो ये बहुत मर्डरस मूड में आ सकते हैं और इनको मार भी सकते हैं. लेकिन अगेन मैं एज आई एम सेइंग 350 प्लस का स्कोर होगा अगर इंडिया पहले खेला. अगर टॉस अफगानिस्तान ने जीता तो बिना कुछ कहे कूद जाएंगे बैट लेकर और कहेंगे जी हम ही पहले खेलेंगे, चाहे 200 बनाए चाहे 250 बनाए, और वो पूरा चांस लेंगे और इंडिया को कोशिश करेंगे कि जितना भी टारगेट दे सके, चाहे 10 विकेट से हारे चाहे 2 विकेट से हारे, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो वन साइडेड मैच होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऑन करंट फॉर्म और द वे अफगानिस्तान हैज प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश. अगर अफगानिस्तान थोड़ा कॉन्फिडेंस देता मुझे उस मैच में, तो मैं कहता थोड़ा फाइट होता, लेकिन राशिद भी उस तरह की लय में नहीं दिख रहे हैं. नबी एक अकेले लोन स्पिनर ऐसे दिखे जो शायद ट्रबल कर सकते हैं, but overall a one-sided match. So CS, you made a reference to the pitch and you know that stadium like the back of your hand, and so let's begin with the pitch report. So the pitch report basically says that so far it was on the slower side and it provided more assistance to the slower bowlers as the match progressed, but they are playing on a freshly laid pitch and it has been prepared using black soil. So आसान शब्दों में दर्शकों को ये समझाइए कि अगर black soil यूज हुआ है तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, थोड़ा सा फिरोजशाह कोटला की थोड़ी अगर हिस्ट्री लोगों को बताएं, फिरोजशाह कोटला के ठीक इस पिच के नीचे एक नाला जाता है. वो एक नाले की बड़ी पाइपलाइन है जो दिल्ली 6 और इधर के रास्तों को का जो कहते हैं मल मूत्र, वो सब लेकर के जाता है. तो ऐसे में इस विकेट से अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आज तक किसी ने बताया कि यहाँ पर फास्ट विकेट बनेगी, एक ही बार बनी थी, वो विंटर ग्रास बना करके 2009 में, अगर आपको याद हो, सुदीप त्यागी ऐसे लग रहा था लिली और थॉमसन बॉल कर रहे हैं. वो एक बार बनी और उसके बाद मैच कॉल ऑफ हो गया और उसके बाद सबने कानों पे हाथ लगाया कि हाँ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ये बैटिंग पैराडाइज है, ये स्लो स्पिनर्स को थोड़ा फायदा देती है, जो ज्यादा एयर में ज्यादा जो छकाने की कोशिश करेंगे उनका फायदा करती है. इस विकेट पे रन बनाइए और रन चेस कीजिए. दोनों तरीकों से अगर आपकी बैटिंग अच्छी है, अगर आपकी बॉलिंग थोड़ा सा कंटेन कर सकती है, तो आप चैंपियन बन सकते हैं. तो इस विकेट पे ज्यादा पेस, ज्यादा सीम, ज्यादा खैर स्विंग तो वैसे भी दिल्ली में बहुत कम होती है इस मौसम में खासकर, तो ज्यादा वो एक्सपेक्ट मत कीजिए. CS Ajay Jadeja, who's now the mentor of the Afghanistan side and our good friend, he made a very interesting comment, I thought, and his comment was that while some of the Afghanistan players are sought after by the IPL matches, a lot of big bucks are being spent for them, but as a team, they are still not right up there because they're a new team and they do not gel as a team yet because they have a problem beating the bigger teams in the bigger games. They are unable to close down. Do you think there are two aspects here? Under Ajay Jadeja, they will benefit more. And two, what does it take to chase down the important matches? दो लाइन अजय जडेजा के लिए. देखिए, वो बड़े कमाल के मोटिवेटर हैं. जो कलंक थे वो सब कुछ चीजें अलग रखी. एज ए क्रिकेटिंग माइंड, ही इज वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन इंडिया. मैंने उनको एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान
ऑफ दिल्ली। इंडिया में तो खैर बहुत कम उनको मौका लगा, और उसके बाद एज ए मेंटर एंड कम कोच कम प्लेयर ऑफ दिल्ली एंड बाकी टीम्स में देखा है, हरियाणा में भी रहे थे। वो बड़े कमाल के मोटिवेटर हैं, तो उनके साथ रहने से इनको बहुत फायदा होगा। और दूसरा, वो फिरोज शाह कोटला की विकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें मालूम है कि वहां पर जितने मैक्सिमम स्पिनर्स होंगे, कुछ भी करते होंगे, उनको कोशिश करेंगे मोटिवेट करके कि आप सीधी सीधी बॉल कीजिए और कोशिश कीजिए ज्यादा भटकिए मत लाइन में। लाइन पे रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अब रही अफगानिस्तान की प्रॉब्लम, अफगानिस्तान के साथ है, पिछले वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में 4 साल का वक्त हो गया, सिर्फ 29 वनडे मैचेस उन्होंने खेले हैं। एंड आउट ऑफ 29, अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये सब कुछ नोट कर लें थोड़ा पाकिस्तान के, तो उन्होंने मोस्टली मतलब कि मोर देन 50% मैचेस उन टीमों के अगेंस्ट खेले हैं जिनकी कोई रैंकिंग्स ही नहीं है, नीदरलैंड्स, यूएई। तो उनका कोई कसूर नहीं है। जब आप बड़ी क्रिकेट खेलेंगे, आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। अभी हम एथलेटिक्स की बात, पहले आपसे बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, नीरज नीरज चोपड़ा का फैक्ट देखना है, हमारे नंबर 2 ने सिल्वर जीता है, उनका उनका देखिए किस तरह से चैंपियन के साथ चैंपियन तैयार होता है। कुछ साल पहले तक इंडिया में जेवलिन ही नहीं था, जेवलिन थ्रोअर तो दूर की बात है, हम जेवलिन देख के भागते थे कि इसमें कोई चांस नहीं है। आज आपके पास वर्ल्ड के टॉप 2 प्लेयर्स हो गए हैं। और इनफैक्ट जब उस दिन माने, शायद इफ आई नॉट रॉन्ग, जो दूसरे प्लेयर थे, उन्होंने जब जेवलिन मारा और उन्होंने एक अच्छा टारगेट दिया, तो लग रहा था कि अगर नीरज को कोई हरा सकता है तो शायद इंडिया नहीं होगा। बाहर वाले तो अब थक गए हैं। जना जना की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जय सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज है, इस मेंटेलिटी के साथ या इस तरह के कॉम्पिटिशन पे अगर अफगानिस्तान नहीं खेलेगी, अगर अफगानिस्तान को अच्छा कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो उनके जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है राशिद, जो सबको ट्रबल करते थे, अब आईपीएल में हम खेलते रहते हैं, आदत पड़ गई है, लेकिन अब वो उतने धारदार नहीं दिख रहे हैं। या उनके बाकी के चाहे ओपनर्स हो, कप्तान हो, वो बैटिंग में लय नहीं दिखती जिस तरह से चेस करना चाहिए। अगेंस्ट, मैं कहा ना कि बांग्लादेश के, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद देयर परफॉर्मेंस। और आज मौका है, अच्छा कीजिए, जाइए, अच्छे रन कीजिए, अच्छी बॉलिंग कीजिए। हार और जीत मैटर नहीं करती। और इंडिया के अगेंस्ट अगर आप अच्छा खेलते हुए हारोगे, तो पूरी टीमें सब खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएगी। सीएस आप हमेशा खोल के पंच करते हैं, तो मैं आपको एक बेट देता हूँ। वो ये कि राशिद खान का मैं काफी फैन रहा, लेकिन अब मुझे लगता है वो थोड़े थके हुए लगते हैं, ओवर एक्सपोज लगते हैं। और क्या पैसे ने उसको उनको बिगाड़ दिया है? देखिए, पैसे ने नहीं बिगाड़ा, मुझे लगता है कि ये कंडीशंस भी, आप जब खेलने शुरू हुए थे तो अफगानिस्तान में क्रिकेट थी, उसके बाद तालिबान आए, अब आप वहां खेल भी नहीं सकते, आपको मार काट दिया जाएगा। अब आप खेलते हैं बाहर जाकर के, और मैक्सिमम टाइम आप जब आप घर से बाहर रहते हैं, पैसा भी इतना नहीं मिल रहा है इनको। पैसा वो नहीं मिल रहा जो रोहित शर्मा और बाकी लोगों को मिल रहा है। इनको पैसा मिल रहा है एक लिमिटेड, इनके जो कहते हैं लेवल के हिसाब से। इनकी ऑप्शंस भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होती। तो उस लिहाज से बिगड़ेंगे जब घर से बाहर रहेंगे, और रोज बाहर का खाना, रोज बाहर का एक एक्सपोजर। नेचुरली आपकी प्रैक्टिस नोएडा में रहकर या प्रोविंशियल पाकिस्तान में, या वो सब क्रिकेट, छोटी क्रिकेट खेल के आप नहीं अपने आप को अच्छा एक्सपोजर दे सकते। आपको खेलना है तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलिए। जैसे आईपीएल में किस तरह के स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं दूसरे प्लेयर्स के, ऋतुराज हो, बाकी के जितने भी प्लेयर्स, फ्रेंच प्लेयर्स हैं, आज वो वर्ल्ड क्लास हैं। क्यों है? क्योंकि अच्छे कॉम्पिटिशन्स में खेल रहे हैं। इनके साथ अनफॉर्चुनेटली 2 मैचेस अच्छी टीम के साथ खेलते हैं, 10 खराब टीमों के साथ खेलते हैं। तो ऐसे में आपका मोटिवेशनल लेवल और दूसरा कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों ही नीचे की तरफ जाते हैं। So, like CS was saying, that Afghanistan is suffering due to lack of international exposure. They do not play enough against the bigger teams, and he's absolutely right there. I'll run you through a quick stat, which basically says that between India and the head-to-head stats between India and Afghanistan, total matches played were 3, which is, and out of that, matches won by India 2. When it comes to the head-to-head in the ODI World Cup, only one match has been played so far, and India has won that. CS, I also want to get in 6 degrees in the afternoon, and it will cool off. One has seen the weather impacting a lot of the humidity. It's really killing quite a few of the players. Was it right to organize this so in the middle of October? You hardly have choices for these kind of tournaments, and obviously the international calendar is
so full that you have only this much of window left, and it was decided much, earlier. So, but again, Delhi is not as hot as Chennai. We had seen during the Chennai game. So it was very hot. It is much cooler after say 5 or so. So initial 2 hours maybe there'll be a little bit of problem for especially for those who will be bowling there and fielding. But otherwise, it's a quite cool breeze, later in the afternoon, taking into account the kind of weather right now. So I think there'll be enough, I would say, pleasure for all the cricket lovers. And as Firoz Kotla always said, there'll be lot of sixes, lot of fours, lot of firecrackers, there, as far as for दर्शकों के लिए जो concern होता है. Your comments on now the famous rivalry between Afghanistan's Naveen ul Haq and Virat Kohli. We know what happened during the IPL match between RCB and Lucknow Super Giants. They almost came to blows, and then Gautam Gambhir also jumped in, and then there was this powwow between him and Virat, and Gautam saying, "Kya tu sikhayega?" So all that jazz happened. Have any sense some more tension like this? I think rivalries are always good, but as long as you don't cross the line. Between Virat and Gautam, I have been watching it for last almost 20 years, or maybe a little less, since, ever since Virat was a junior or, then got into the Ranji team, the rivalry started there. There has been tension between the two. But again, cricket should be the priority for both of them. And knowing, especially Virat, is cricket, but ever since he became captain of India, I think that aggression he has, वो अपने साथ carry करके ले गया. और Gautam Gambhir, I always believe he doesn't use comma, full stop, anything. During the matches, वैसे ही वो बोलते हैं. Both are quite mature and they should take it in a good spirit. Right. A quick word on Shubman Gill. जो खबर अब लेटेस्ट आ रही है कि उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्हें डेंगू हो गया था, एंड शुभमन गिल अब अपने होटल में हैं, लेकिन जो डेंगू से झेल चुके हैं और वो जानते हैं कि वीकनेस बहुत तगड़ी होती है, प्लेटलेट काउंट उनका ड्रॉप कर गया था. He won't be playing in this match. So CS, in the past 12 months, he has 5 ODI hundreds to his name this year, and he was expected to play a very crucial role in this ODI World Cup, which doesn't seem to be happening. Your comments? I think he should not be available for next, say, at least 2 weeks. So 2 weeks mean another 2 or 3 matches. He won't be able to play, especially the crunch match against Pakistan. But again, these kind of things happen. And as long as, you are safe, you are healthy, that's what matters. Cricket will come, cricket will go. Your career or your life is more important than all this. But a good chance for Ishan Kishan, I would say. He's equally talented. He's very talented. But my only problem is he's your number one wicket keeper. Otherwise, I don't know why KL Rahul is keeping the wickets. If Ishan Kishan is playing, he should be keeping the wickets. Unless and until you have decided earlier कि KL Rahul को खिलाना है कम वॉट में, ये तो अच्छे दामाद हैं, अच्छे वो है, तो उनको खिलाना और ईशान किशन को चाहे वो 100 करें चाहे 70 करें, पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट आप बचा के ले जाएं, लेकिन उनको कीपिंग नहीं करवाएंगे. दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस इन इंडियन क्रिकेट. इससे ज्यादा शायद बोलना नहीं चाहूंगा. अच्छा लाइन आपने कहा, अच्छे दामाद हैं. खैर आगे बढ़ते हैं टॉप बैटर्स की तरफ. सबसे पहला नाम है हमारे कप्तान साहब का, रोहित शर्मा. कुछ स्टैट्स जल्दी से अपने व्यूअर्स के लिए. सो सीएस फॉर द पास्ट 2 years he's been doing a great job. 114 from 8 innings in 2022, average 41 रहा है, and 109 from 16 innings in 2023 with a massive average of 47. But still he has been criticized by Sunil Gavaskar, who saw him in the opening match where he got out for a duck, and he says his feet aren't moving. He's too slow. Your thoughts? देखिए, गावस्कर साहब जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है बहुत कम बोलते हैं जब उन्हें काम नहीं मिलता. तो एनीवे, आई डोंट टेक हिम सीरियसली, बट यस, ही वाज राइट. रोहित शर्मा इज नॉट मैच फिट. जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, जिस तरह का फुट मूवमेंट या ओवरऑल फील्ड पे भी वो दिख रहे हैं, मुझे वो फिट नहीं लगते.
whether he's carrying an injury or there is lot of pressure or whatever, but he is not match fit, number one. लेकिन उनकी बैटिंग की बात करें तो आई स्टिल बिलीव ही इज योर टॉप बैट्समैन. वो जब खेलने लगते हैं, उनका जब रिदम चलता है, तो उनसे अच्छा कोई नहीं मार सकता. हिटर उनसे अच्छा कोई नहीं है. रनिंग बिटवीन द विकेट्स में तक भी वो चला ही लेते हैं, बेशक थोड़ा स्लो रहते हैं बाकी के. लेकिन ओवरऑल आई थिंक ही नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क on his fielding and obviously on his fitness. In the opposite side is the Afghan captain Rahmanullah Gurbaz, and they are saying about him that in the Kotla conditions he can hit through the line. Well, let me tell you, Afghanistani players look much fitter, leaner, and obviously, but only problem for them is they are probably not, as agile on the field, जो कि होना चाहिए, for lack of their exposure in IPL, or probably our players or the players around the world, they have improved their fielding with their exposure in IPL or the shorter leagues. So in a way, I think there's much for them to improve on their फील्डिंग और बॉलिंग. बट ओवरऑल बैटिंग में तो एक ही चीज मैं जानता हूँ, आप जितना ज्यादा खेलेंगे, देखिए देर इज नो जो कहते हैं रिप्लेसमेंट, या जो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बॉलिंग मशीन आपको दे सके. आप बॉलिंग मशीन से हजारों बॉलें खेल लीजिए, लेकिन जब बॉल निकलती है शमी के हाथ से, बुमराह के हाथ से, वो जो स्विंग करेगी, वो जो कट करेगी, वो जिस तरह की लेंथ करेंगे या आपको सरप्राइज देंगे, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. इसलिए you have to play more and more against the quality bowlers. You have to get exposure against the top teams in order to feel that pressure and absorb that pressure. आप उस प्रेशर के बिना नहीं सक्सीड हो सकते, ना ही आप अच्छी टीमों को हरा सकते हैं. बट अगेन इट्स अगेन लर्निंग कर्व has been going on for last 7-8 years. I don't think they are reaching anywhere. So CS, quick comments. We don't have much time today, so quick comments on Hardik Pandya, who is very good against the spinners. Virat Kohli, who came into his own in the last match against Australia, and of course KL Rahul, who has been in good nick and is also the main wicketkeeper for India. So, what do you have to say about these three gentlemen? Between Virat and KL Rahul, I would say KL Rahul gave me more confidence. The way he batted right from the beginning, first ball जो middle किया था, वहीं से. Virat was very lucky to have escaped that catch, at 12. Otherwise, India की पूरी ये जो success था, ये जो सारी story हम आज बोल रहे हैं, वो एक different होती है अगर आप वो 20-22 पर 4 हो जाते तो. But anyway, that's part and parcel of cricket. But on Hardik Pandya, I was a little bit disappointed with his bowling. हार्दिक पांड्या को मैच विनर बनना है, और जिस तरह 6 मैचेस स्पेशली उनकी बॉलिंग बहुत इंप्रेसिव थी. ही वाज बॉलिंग एट ऑलमोस्ट 140 137 एंड देन कमिंग बैक विद दैट हार्ड हिटिंग शॉट्स, और फील्डिंग में भी वो बहुत ही अच्छे टीम के चीता माने जाते हैं. तो ऐसे में उनको अपनी बॉलिंग पे तो ध्यान देना पड़ेगा. अगर उनको इस तरह के रन पड़े और ऐसी विकेट्स हुई जैसे आज की विकेट भी है, इट विल बी अ गैम्बल टू प्ले 3 स्पिनर्स. अगर हम तीनों स्पिनर्स के साथ खेलते तो हार्दिक का रोल बहुत बहुत बड़ा है. हार्दिक को ना केवल एक पेस बॉलर को रिप्लेस करना, बट ऑल्सो एज ए 6th बॉलर अगर कोई पिटता है तो हार्दिक पे ही आप जाएंगे. तो इट विल बी ए गैम्बल. मतलब कि अगर आप मुझसे पूछे, आई विल गो इन विद 3 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स. बट द टीम की वही प्रॉब्लम है, कोई दामाद कोई कुछ, तो किस स्पिनर्स को बिठाएंगे, उसमें आपको फिर अश्विन बिठाना पड़ेगा. जिस अश्विन को लेकर इतनी बात हुई, उसके बाद खैर ऊपर से कहते हैं ना गॉड गिवन कंसेंट थी कि उनको खेलना ही है, तो मुझे लगता है आज बिठाने की भी बात आई तो अश्विन को ही बिठाया जाएगा, नॉट द अदर टू. Last point, where the Indian bowlers are, and India has not really been under coach Rahul Dravid following this horses for courses policy. So there seems to be a set template, and he likes to keep pushing those same players through. But like you're saying, Ashwin got through the Iron Curtain because of other circumstances. But Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Bumrah, and Siraj, who would you like to persist with now, with more and more important matches coming up? Because India after this will play Pakistan, then it plays Bangladesh, New Zealand, England, Sri Lanka, South Africa. So they are all going to be pretty tasty matches. Would you like to persist with these guys or juggle them around?
Well, to me, I think Shami is much more lethal than Siraj. I have nothing against Siraj, but the point is the kind of experience and also the way he seams the ball, and white ball may initial with the kind of weather we can see in the coming days. I think to me, Shami should be the number two bowler. If we are in three, then obviously Siraj and Shami and Bumrah. But when it comes to spinners, as I have said, I always believe there should be number one bowler, your should be Ashwin. And then comes all-rounder slot for Jadeja. And then the surprise element, Kuldeep Yadav. अगर आप कुलदीप यादव को सभी मैच के टेक माय वर्ड्स मतलब कि मेरा जो इतना एक्सपीरियंस और समझ आता है अगर कुलदीप यादव को आप सभी मैच खिलाएंगे तो ये उसके साथ भी नाइंसाफी है वो कितने दिन उसको रीड नहीं करेंगे या वो कितने दिन ये तेज तेज मार करके अपनी बॉल को टॉप स्पिनर्स मार सकता है फाइनली जिस दिन उनको पढ़ेंगे जैसे पहले भी हुआ था ओवर एक्सपोजर टू एनी चाइनामैन बॉलर कुड बी फेटल फॉर हिज ओन करियर उनको कम खिलाइए उनको मैच विनिंग उसमें खिलाइए उनको बड़ी टीमों के अगेंस्ट उतारिए लेकिन लगातार उनको खिलाना मुझे कभी लॉजिक समझ नहीं आता एंड एनीवे वर्ल्ड कप अभी ऑन है अभी हम इन चीजों पे बात करेंगे Great, CS. Thank you very much for your time and the prediction for always a pleasure. The prediction for today's match between India and Afghanistan in Delhi is that India should win this with ease, but you never know what surprises are all about. But the way Afghanistan is shaping up, and like Ajay Jadeja, their mentor, is saying that they still need to fine-tune themselves for a big match. And for them, today's match is going to be a huge match. We will tune in and watch it with you. Thanks, yes, once again.